वैसे लास्ट क्लास में यार हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट्स के साथ स्टार्ट किया था. सो वी डिड द वर्किंग ऑफ डायोड. सो हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कंक्लूड कर लिया था एंड वी हैड जस्ट मूव्ड ऑन टू फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो आज होपफुली इसका काम कंक्लूड करा दूंगा. आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है गाइस, सो मैं स्टार्ट करा दूं. So in the last class, as I said, we concluded with the working of half wave rectification. So अब basically full wave की working करनी है. So in the last class, I just made you write down the statements. The working was left. Okay, I'll just quickly go through the wordings before I move on to the working of the diagram. Okay, so full wave rectification can be achieved by using a combination of four diodes, which are arranged in a special sequence. This arrangement is called a bridge rectification, or it is called a full wave rectification. The advantage of this arrangement is that in case of half wave, 50% power was lost. Whereas, as you would see in a while, कि full wave rectification का basic advantage ये है कि it ensures that there will be no power loss at the output. So how does the circuit look like? वो मैंने draw कर लिया था. So how does the working happen ना? वो मुझे explain करना है. So a combination of four diodes can be seen. I have purposely constructed two of them with the red color, the other two with the green color. The statement says two opposite vertices, any two, as long as they are opposite, they will serve as the input. You would know it's the input because of the placement of the AC supply. Then the remaining two opposite vertices, so whichever are the remaining vertices, they will serve as the output. And again, you would know they are serving as the output because a resistor will be placed at the output. So AC supply at the input terminals and a resistor at the output terminals. I've constructed that diagram in which A and B, the opposite vertices, are serving as the input because they are connected with the AC supply. And C and D are serving as the output because they are connected across the resistor. So this is how the arrangement would look like. So A and B connected with the AC supply serves as the input, and C and D connected with the resistor, so that serves as the output. So how would the working go about now? Usko show karna hai. Since I've shown the diodes with red and green combination ना, तो मैं working भी red और green marker से कर लेता हूँ. So half of the working with the red, the other half with green. So now how would the working होगी कैसे ना, उसके steps देख लेते हैं. So for the AC supply, I'll go with the first half cycle. So for the first half cycle of the AC supply, let's break down the AC supply into two portions, the first half and then the second half. So for the first half cycle, मैंने plus minus mark कर लिया है. मैंने assume कर लिया plus at the top, minus at the bottom for the first half cycle. You could have assumed the other way around as well. It's fine. So अब मैं red वाले से for the first half cycle working start कर रहा हूँ. As the current begins to flow in the direction indicated, and as soon as the current reaches the point B, from B, you would expect the current to follow the path of D1. Why? Because D1 is forward biased. So current is going to follow through the red wala diode because it is forward biased. So basically diode D1 conduct karega. Now the current is going to reach the point D. Then from the point D, the diode D4 is reverse biased. So the current cannot go into that branch. So D ke baad, then the current is going to flow through the output. Okay, so as soon as the current flows through the output, मैं इसके arrows बना देता हूँ on the diagram. So the current flows through the output
in the direction x to y. And as soon as the current flows through the output in the direction x to y, a voltage will be obtained across the output. So if I construct the shape of the output voltage against time graph, so for the first half cycle, that is the one shown with the red marker, as soon as the current flows through the output in the direction x to y via the resistor will recognize the flow of current, and consequently आउटपुट पर आपके पास फर्स्ट हाफ साइकिल वाली पल्स आ जाएगी, just the first half cycle. Then from Y, the current continues and the current reaches the point C. अब C के बाद now the current needs to decide, should it follow the red diode D2 or should it follow the green one D3? They are both forward biased, mind you, so the current can go either ways. But the reason why the current will prefer to flow through D2 and not D3 is because D2 diode will allow the current to end up its first half cycle at the negative terminal of the AC supply. Okay, so the current prefers to flow through D2 because following that path of D2 allows the current to end up at the negative terminal of the AC supply. See? So, हाँ सही सही लिखा है तुमने. So, अभी तक for the first half cycle, everything shown with the red marker is valid. And the diode D1 and the diode D2, आमने सामने वाले जो दो डायोड्स हैं ना D1 and D2, अभी ये दोनों डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं. So first half cycle is concluded at this point, and diode D1 and D2 have conducted during the first half cycle. मोहित आपकी वर्डिंग्स भी सही है. ठीक है, so for the first half cycle, आमने सामने वाले दो डायोड्स ने कंडक्ट किया है. So in my working, for the first half cycle, the diode D1 and the diode D2 are conducting. ठीक है, these are the two red ones whose alignment was identical. तो ये दोनों फिलहाल कंडक्ट कर रहे हैं. अब सप्लाई विल रिवर्स इटसेल्फ. सब रिवर्स सप्लाई के लिए मैं प्लस माइनस की साइंस को चेंज करता हूं. नाउ आई शिफ्ट ऑन टू द ग्रीन कलर. सो चेक कीजिएगा, अब मैं सप्लाई को फ्लिप कर रहा हूं. सो द टर्मिनल्स ऑफ द एसी सप्लाई विल नाउ गेट रिवर्स्ड. तो अब ग्रीन कलर से वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं. तो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन फॉलो कर लेना. ऑल द रेड कलर्ड एरोज are representing the flow of the current during the first half cycle. And diode D1 and D2, the ones which are opposite each other, were conducting during the first half. अब second half draw करता हूँ. So अब green arrows को follow कर लेना. So from the positive terminal, current begins to flow. थोड़ा सा untidy हो जाएगा for obvious reason. और ये current आपका flow करता हुआ A पर आ जाएगा. Then from A, current flows through D4 because this is forward biased, and the current reaches the point D. Then from D, the current exits and flows through the output resistor. And as soon as the current flows through the output resistor for the second time in the same direction XY, so the resistor recognizes the flow of current and again produces a pulse which is similar to the first one, but this time shown with the green color. The reason why both pulses are shown in the same quadrant is because the direction of the current at the output is the same, that is from X to Y. ठीक है, रोहिल ने सही लिखा है, same path. So same direction भी सही है, same path भी सही है.
अच्छा, y से आगे मूव करता हूँ। तो करंट फ्लो करता करता आपके पास इट रीचेस द पॉइंट लेबल्ड एज C। अब C के बाद both diodes D3 and D2 are forward, but the current will prefer to flow through D3 because that allows the current to reach back to the negative terminal of the battery to conclude the second half cycle. If you look carefully, among all the arrows that you are seeing, you should be able to recognize that D1 and D2, the red ones, were conducting during the first half cycle, and D3 and D4, the green ones, were conducting during the second half cycle. So as the cycle keeps getting repeated, a continuous waveform will be observed at the output. And based on the shape of the graph, we identified this graph as an example of a full wave rectification. So half wave के अंदर there was a 50% power loss, और फुल वेव के अंदर आपके पास कोई पावर लॉस नहीं हो रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो रायान ने पूछा है ना, आई थिंक दैट क्वेश्चन काइंड ऑफ मेक सेंस, तो मैं उसको भी एड्रेस कर दूं। हिज क्वेश्चन इज कि यार अगर आपको इनपुट का ग्राफ बनाना हो तो हाउ वुड दैट लुक लाइक, है ना। तो टू आंसर रायान्स क्वेश्चन, इफ दे वर टू आस्क यू यार आपको इनपुट का ग्राफ बनाना है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस इनपुट के ऊपर आपने एसी सप्लाई प्रोवाइड करी है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ विद सर्कल, तो आपको नजर आ जाएगा कि इनपुट के ऊपर आपने एसी सप्लाई लगाई है। सो दैट मींस द शेप ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम ग्राफ जो एसी सप्लाई का बनता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। ड्रॉ कर देता हूँ। इसको भी सिंगल कलर के साथ शो करना हो तो कर दीजिएगा, लेकिन खैर मैं सेम सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग विद द सेम कलर कोडिंग जो मैंने ऊपर यूज करी थी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन। ना यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से आपको इस सर्किट की कितनी डिटेलिंग पता होनी चाहिए ना, मैं वो क्विकली डिस्कस कर लूँ। तीन तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं, सो मैं वो तीनों एग्जांपल्स 1, 2 एंड 3 करके बता दूं। I'll get through with the two examples on this side and then I'll shift the page for the third example. एक तो बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम्स के अंदर they will give you an incomplete circuit. So you can clearly see diodes are missing. So the diodes need to be positioned in the gaps. So diodes nahi bane hue. And um, the rest of the circuit will be provided to you, kind of like this. So they will give you the AC supply. They will give you the output, but the positioning of the diodes will be missing. And the question would be something along these lines. Draw the arrangement of the four diodes in the blank spaces such that or something along these lines, इस तरह की wording लिखी हुई होगी, such that A, in fact इस wording को red से लिख लो ताकि आपके लिए highlight करना आसान हो, such that A is at a
higher potential than B. Something along these lines. The question will be कि आपको diodes की alignment show करनी है, arrangement show करनी है in the blank spaces such that A is at a higher potential at that than B. इस wording का मतलब क्या बनता है? A is at a higher potential than B is another way of saying that the current should flow So when the current begins to flow, and as you reach the point which I'm labeling as X, up you need to ask yourself, how would the diodes be placed in the two positions जहां पे मैंने question marks बनाए. Common sense does suggest that the question mark which I'm erasing, I would rather want the diode in that branch to be forward biased. And the other question mark which I'm about to erase, I would rather want the diode in this branch to be placed in a reverse biased mode. So in case if you're wondering why, then the simple reason is so that the current can go through the top branch. Because if the current goes through the top branch, then surely you can expect the current to follow the direction A to B as was specified in the question. तो डायोड्स की अलाइनमेंट सोच लीजिएगा इस तरीके से कि वो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. So since you wanted the current to flow in the direction A to B, I purposely went with the top wali branch ka diode as forward. So the one which I'm circling right now, उसको मैंने forward के लिए रखा और जिसको मैं dotted circle बना रहा हूँ उसको मैंने purposely reverse के लिए रखा ताकि करंट मेरी टॉप वाली ब्रांच को फॉलो करता हुआ आगे जाए और eventually the current can follow the path going from A to B. अच्छा जब आपने दो डायोड्स डिसाइड कर लिए ना तो रिमेंबर फ्रॉम द टॉप डायग्राम कि जो आमने सामने वाले डायोड्स थे ना द वंस दैट वर अक्रॉस ईच अदर उनकी अलाइनमेंट वाज सिमिलर. So if I quickly go back to the top diagram, you can clearly see this for yourself that the diodes opposite to each other were aligned in a similar fashion. Look at the two red ones or look at the two green ones. They had a similar alignment. So once you've decided for two diodes, the other two shouldn't be a problem. तो जब आपने दो डायोड्स के लिए सोच लिया ना तो फिर अब आप ये सोचिएगा कि the alignment should match. तो hence same alignment copy down कर लेना. And likewise, the alignment should match. तो same alignment copy कर लेना. So every time around, you don't have to waste your time looking at the entire sequence of the direction of currents. दो डायोड्स डिसाइड कर लो और बाकी के दो डायोड्स की अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी. Just remember the fact that the diodes across each other must be aligned in the same fashion. Okay? So this is one kind of question where they ask you कि आपको diodes को empty spaces में fill up करना है. तो प्लस माइनस मार्क कर देना at the input. करंट का कोई भी एक पाथ ट्रेस आउट करके बनाना शुरू कर देना. And then decide कि डायोड्स को कैसे होना चाहिए. Decide the first two diodes. And once you have decided the first two diodes, then the fact that opposite diodes must be aligned in the same manner
तो आपके बाकी डायोड्स की अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली वर्केबल होगी। ओके, तब तक मैं रायन को आंसर दे दूं। Would there be any chance in the graph or placement of the diodes if we reverse the poles of the AC supply? मैं रिवर्स करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एसी सप्लाई के पोल्स में, फॉर एग्जांपल एज रायन इज सजेस्टिंग, अगर आपने इसको रिवर्स सोचा होता, तो लेट मी erase all these arrows and according to his question I'll go with the reverse. ठीक है, मैं रिवर्स बना के दिखाता हूँ। सो आई एम नाउ मार्किंग प्लस ऑन द राइट, माइनस ऑन द लेफ्ट, ताकि सिर्फ ये कि आप रिवर्स के साथ अगर चाहो तो चेक कर लो एंड द सिचुएशन विल वर्क आउट। लेट्स सी हाउ। तो रायन मैं प्लस से बना रहा हूँ, एरो चेक कर लो। दिस करंट इज गोइंग टू रीच द पॉइंट व्हिच आई एम लेबलिंग एज पी राइट नाउ। ये लेबलिंग बाद में इरेज कर दूंगा। ठीक है, देन फ्रॉम द पॉइंट पी द अलाइनमेंट इज सच दैट टॉप ब्रांच वाला डायोड विल कंडक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली नोटिस करो we are still coming up with the same conclusion, that is current is still flowing in the direction A to B. मैंने और आगे नहीं बनाया बिकॉज अब जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रीचेक जिस तरह आपने मुझे करने के लिए कहा था, तो मैंने सप्लाई को फ्लिप करके जस्ट सो दैट कि रीचेक हो जाए, मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, सो अब मैं हाँ, अगर आपको पी को नोट बोलना है तो बोल दो। एएस में बोलते थे, यहाँ पे शायद जरूरत ना पड़े इस टर्म को यूज करने की। ठीक है, सो अब मैं ये एरोज वगैरह मिटा रहा हूँ बिकॉज दीज आर ऑल रिलेटिव एरोज ना, कि आप कौन से वाले को प्लस और कौन से वाले को माइनस अज्यूम कर रहे हो। सो आई थिंक एरोज में मिटा देता हूँ, वो ज्यादा सेंसिबल है। और सप्लाई के साथ भी मैंने प्लस माइनस एरेज कर दिया है बिकॉज वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप प्लस और माइनस कहाँ पर मार्क करते हो। तो कोई भी एक कन्वेंशन फॉलो करके वर्किंग करना स्टार्ट कर देना, रिजल्ट विल नॉनदलेस वर्क आउट टू बी द सेम। अच्छा, सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क, तो एग्जांपल 2 करके लिख देता हूँ। दिस क्वेश्चन is kind of reversal of the previous question. Let's see how. तो कुछ केसेस में वो ये करते हैं कि वो आपको डायोड्स बना के दे देंगे, एज यू वुड सी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट रिवर्स है। सो दिस टाइम अराउंड कोई गैप्स वगैरह नहीं है, रादर डायोड्स गिवन है, एंड द क्वेश्चन वुड नाउ बी complete the circuit by placing V in and V out. तो अब डायोड्स गिवन है, बाकी का सर्किट मिसिंग है, एंड दे वांट यू कि आप इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की प्लेसमेंट शो करो ना। अब इसके अंदर माय सजेशन टू यू वुड बी कि जस्ट एज अ ट्रायल एंड एरर रैंडमली मार्क कर लीजिएगा, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कर रहा हूँ। गलत होगा ना तो पता चल जाएगा। तो मैंने ये किया कि मैंने टॉप और बॉटम को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी चेक कर लेंगे जस्ट टू सी कि सही है या गलत है। और मैंने लेफ्ट और राइट को रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। सो इनपुट और आउटपुट तो आ गया। इफ इट वर्क्स इट्स फाइन, इफ इट डजंट आई विल फ्लिप द अरेंजमेंट। तो कोई भी एक अरेंजमेंट बना देना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विद, गलत होगा तो पता चल जाएगा। अगेन प्लस माइनस मार्क करके लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अगेन योर चॉइस। मैंने प्लस ऊपर मार्क कर दिया है और माइनस नीचे मार्क कर दिया है। You could have gone the other way around as well if that suits you. The moment I start marking the current,
And the moment I reach the point labeled as P, right then and there आपको अंदाजा हो जाएगा कि this circuit will not work. The reason for that is both diodes which I'm circling right now are offering a reverse biased mode, which means the current can neither go through the right branch nor can the current go through the left wali branch. So दोनों में से किसी में भी करंट नहीं जा सकता. So right at this point आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये डायग्राम गलत बना हुआ है. If you would have gone for positive at the bottom and negative at the top, even then you would face a similar kind of a problem. Let's do that. So either ways पता चल जाएगा कि गलत बना हुआ है. As soon as I reach the point which I'm labeling as Q, once again, I can't really decide which branch should let the current flow because this time both diodes are equally forward biased. So again, the current can't really decide which branch to go for. तो judgment हो जाएगी कि it doesn't seem to work. अब जब idea हो जाए ना कि it is not working, तो फिर if it works, it's fine, leave it. If it doesn't, तो फिर जाहिर है थोड़ी सी adjustment करनी पड़ेगी. अच्छा बस adjustment ये कर लीजिएगा and that's about it. AC मिटा दीजिएगा, उसकी जगह resistor लगा दीजिएगा. पूरा सर्किट मिटाने की जरूरत नहीं है. और दूसरी साइड पर रेजिस्टर मिटा दीजिएगा और एसी लगा दीजिएगा. फ्लिप कर दीजिएगा बेसिकली. एंड देन अगेन इफ यू वांट टू चेक यू मे डू सो. और आई थिंक अब जजमेंट हो जाएगी कि दिस सर्किट इज श्योर इनफ गोइंग टू वर्क. तो बस पोजीशन स्विच कर दीजिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा. नो नीड टू एरेज द एंटायर डायग्राम. इन केस इफ यू वांट टू चेक दिस थ्रू, so I think the working seems to be happening. है ना? It will take the top वाली branch जिसको मैंने टिक किया हुआ है and will not favor the one जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ है. So I think it seems to be working. So this is the second kind of question that they ask you. मैंने प्लस माइनस वगैरह मिटा दिए हैं और मैंने एरोस के डायरेक्शंस वगैरह मिटा दिए हैं because these are all relative directions ना, इसलिए. ठीक है. So in the first question the diodes were missing. In the second question the diodes were given but the supplies were missing. Input in the output voltage supply was missing. So we have taken care of that. So then the third kind of question that they ask you is इसके लिए मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा. अब यार ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ना, इसको मैं एग्जाम्पल 3 की लेबल कर देता हूँ आई गेस, ताकि एक सीक्वेंस रहे. इसमें देयर आर क्वाइट अ फ्यू पार्ट्स. सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं डायग्राम के नीचे एक एक पार्ट ड्रॉ करता हूँ. समझाने के बाद आई टेक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. तो सिंस मैंने बहुत सारे पार्ट्स लिखे हैं ना यहाँ पर, सो what I'll do is I'll take each part, I'll shift it right under the diagram, I'll explain it, and then I'll shift it back. So I think इसमें 6-7 parts आ जाएंगे. तो अब आप इंडिविजुअल पार्ट्स को देखते जाना. रिहा ने लिखा है, कैन यू शो हाउ द करंट वुड फ्लो? डू यू मीन इन द प्रीवियस डायग्राम, रिहा? ओके. ठीक है. फॉर द एसी सप्लाई विच वे डू यू वांट मी टू गो फॉर? प्लस मैं कहाँ मार्क करूं, माइनस कहाँ मार्क करूं, टॉप पे क्या, बॉटम पे क्या? तुम सजेशन दे दो एंड देन आई गो फॉर इट. एनी. चलो ठीक. अब मार्क करता हूं तो देख लो. फ्रॉम द पॉजिटिव ठीक है रिहा, अभी तक यहां से जा रहा है. Then it flows through the output. , , , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
and it returns back to the negative. If this works out for you, तो मैं ये वाले arrows के erase करके, you want me to go the other way around, or is that okay? ठीक है. So guys, लेकिन मैं arrow मिटा दूंगा, because the arrow kind of gives the impression as if this is the only possible way, and it isn't. So let's just get rid of the arrows first. Then I'll shift back to the diagram which I was discussing. कोई भी डाउट हो ना रेहा तो just keep asking, मैं आपको बेटा sort out करके बताता जाऊंगा. So coming back to this working. Gee, so my first question was, so I'll show every question right alongside the diagram. Once I'm done with it, मैं इसको shift कर दूंगा. So first part read कर लो. Sketch a graph of voltage against time if a CRO is connected between the terminals A and B. Okay, so if you connect a CRO between the terminals A and B, what shape would you expect to be observed on the screen of the CRO? मैंने रीजनिंग लिखी है, पहले वो रीड कर लो और फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ. Terminals A and B serve as your input Vn. Check करो from the diagram. Terminals A and B serve as your input Vn because it is connected to the AC supply. Hence, the graph should resemble the shape of an AC supply. So this is how the graph. ठीक है, ये फर्स्ट चीज हो गई. अच्छा, अगर कुछ पूछना हो ना, मेरे शिफ्ट होने से पहले पूछ लेना, क्योंकि मुझे फिर वो हर पार्ट को शिफ्ट करना है ना. All right, guys. So coming back to the second part now. So since for all of these parts, I need the main diagram. All done. अब second वाला part. Once I'm done with the shifting ना, तो फिर zoom in कर दूंगा ताकि आप read कर. So second part. Sketch a graph of voltage against time if a CRO is now connected between the terminals C and D. So C and D serves as your output V out because it is connected to the resistor. Because C and D serves as your output because it is connected to the resistor. Hence, the graph will be that of a full wave rectification. So since CD serves to be as your output terminals because it is connected across the resistor, so the graph must resemble the shape of a full wave rectification, the shape that is observed at the output. इसका ग्राफ ये बन जाएगा. ठीक है, सो शिफ्ट कर दूं, नेक्स्ट पार्ट देख लो. थोड़ा सा केयरफुली देखना. रिहा ने पूछा हुआ है कि हाँ, डज इट मैटर हाउ मेनी वेव्स वी मेक? नहीं, डजंट. एटलीस्ट वन कंप्लीट साइकिल बना देना एंड देन द रेस्ट इज अप टू यू. अब थर्ड वाले पार्ट के अंदर
sketch a graph for voltage against time if a CRO is connected between the terminals A and D. Okay, so what that means is that a CRO is now connected across the diode labeled as D1. ठीक है? So how would the shape look like? पहले wordings देख लेना. Diode D1 is placed between A and D, full stop. It will allow current to flow for only half a cycle, as shown previously. So the diode D1 only allows current to flow for half a cycle. You know, मैंने red से बनाया और green से बनाया है. So the diode D1 will only allow current to flow through for one half cycle, not for the other half. Hence, the graph will be that of a half wave rectification. Okay, so the diode labeled as D1, the red one, only conducts for one half cycle. Therefore, you should expect the waveform on the CRO to resemble the shape of a half wave rectification. So for a diode D1, if a CRO is connected, so since the diode D1 only conducts for half of the time, therefore you would expect the shape of the graph to be that of a half wave rectification, something along these lines. So I have a wave and then a flat line. Okay, the wave is implying, the pulse is implying that diode D1 is conducting. Then the flat line indicates it doesn't conduct for the second half. Then again a pulse followed by a flat line. And if you want to continue further, it's up to you. The sequence kind of gets repeated. So this is how the shape would appear for diode D1, because the diode D1 will only allow current to flow for 50% of a complete cycle. Now, if however your question was, okay, मैं इसको zoom in कर रहा हूँ, देख लो. If this was the question now. Okay, so unfortunately all the questions are based on this one diagram. So इसीलिए मुझे ये है कि वो shift around करना पड़ रहा है. So now the question says, sketch a graph for voltage against time if a CRO is connected between the terminals B and D. So connecting the CRO between the terminals B and D is as good as saying that now we are trying to look at the behavior of the green wala diode, because the green diode D3 is positioned between the terminals B and D. इसकी reasoning मैंने क्या लिखी है? The diode D3 is placed between B and D. It will allow current to flow not for the first half, rather मैंने लिखा है, as you can read appropriately, it will allow the current to flow for the second half cycle. Hence, the graph will once again be that of a half wave rectification, with one difference. जब जब रेड वाला कंडक्ट करेगा ना, तो ग्रीन वाला नहीं करेगा, और जब ग्रीन वाला करेगा तो रेड वाला नहीं करेगा. So this diagram must be similar to the previous diagram, with the difference being
इसमें पहले फ्लैट लाइन आएगी. So the first flat line is for the instance when the red one was conducting. फिर वेव आएगी. Again flat line. फिर again wave. तो पैटर्न वही बना हुआ है जैसे कि पहले बना हुआ था. बस सिर्फ ये फर्क है कि the red one was conducting for the first half cycle and the green one is conducting for the second half cycle. तो अगर आप दोनों ग्राफ्स को देखें तो वो शेप वाइज तो सिमिलर है, बट सिर्फ ये फर्क है कि दे आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर बिकॉज व्हेन D1 is conducting, D3 will not conduct, and when D3 is conducting, D1 will not conduct. Similar shape banega for a half wave rectification, with the only difference being this shape appears to be anti-phase with the previous one. The previous wale ke andar, it was a pulse, then a flat line, then a pulse, then a flat line. Iske andar it's the flip effect. Pehle flat line, then a pulse, then flat line, then again a pulse. जी रिहा का देखो अच्छा क्वेश्चन है. रिहा, कैन यू टेक्स्ट दिस क्वेश्चन एज इन इसको एवरीवन पे सेट करके पूछ लो. गाइस जरा रिहा वाला क्वेश्चन देख लो, है ना. हर क्वेश्चन डज मेक सेंस. सो शी इज आस्किंग हाउ डू वी नो which one contributes towards the first half and which one contributes towards the second half, and surely we don't, and neither does the examiner. So whenever the examiner is going to ask both of these parts side by side, Reha, the only thing that the examiner is looking for is not whether or not your graph is correct, but rather the examiner is kind of comparing both of graphs with each other. And so long as you have constructed them anti-phase with each other, they will go ahead and give you the marks. So the graphs can be flipped. Okay, when I say the graphs can be flipped, one can be constructed for the other one as a replacement as well. So they'll always ask these two parts in conjunction with each other. And the advantage would be kind of आपके लिए advantage हो जाएगा. You know, as long as आप दोनों graphs को बनाते हुए बस इस बात का ख्याल रखना कि when one is conducting, the other one shouldn't. Doesn't matter which one you consider the first and which one you consider the second, as long as they are anti-phase with each other, the job gets done. Okay, so they are not looking at the correctness of the graph. Rather, they are just comparing the two graphs, and they'll just visually accept the correct graph as so long as the two graphs appear to be anti-phase with each other. Okay? All right, मेरा ख्याल है I think answers तो हो गए ना. सही है. So इसको erase करके let me just shift it back. The one time Reha, when they asked this question now, what they did was, and before I continue, let me show that example. वो मैंने इसलिए निकाल के रखा था because generally जो question रिहा ने पूछा वो कोई ना कोई पूछ ही लेता है. So I was kind of suspecting कि यार वो question आएगा. देखो, this is how आपको hint मिलेगा. मैं इस question को बाद में upload कर दूंगा. अभी पहले सिर्फ आप लोग read कर लेना कि वो आपको hint किस तरह दे रहे होते हैं. So combination of 4 diodes is given to you. अब look carefully. They have given you a figure 7.2. खुद बनाकर एक ग्राफ दे दिया है. They have given you a graph of figure 7.3. खुद ही दे दिया है. 2 दफा AC सप्लाई का पूरा ट्रेस आपको बना के दे दिया है for your convenience. Now the question is saying, on the axis of figure 7.2, draw a graph to show the variation with time of the voltage across diode A. So diode A के लिए they want you to construct the graph. You know, अगर मुझे ये axis पहले से provided है, अच्छा, the yellow color goes with yellow. So all I need to do is जो trace दिया हुआ है ना, I'll just follow it.
तो इन्होंने पहले पल्स दी हुई थी, तो मैंने पहले पल्स बना दी, बाद में क्लिप कर दिया, फिर वापस बना दी, फिर क्लिप कर दिया। तो इस तरह से कंफ्यूजन अवॉइड हो जाती है। तो दे ऑलरेडी गिव यू अ ग्राफ टू बिगिन विद, आपको उसी के ऊपर ट्रेस करना होता है, तो यू कांट रियली गो रॉन्ग। अच्छा, एंड देन इन द सेकंड पार्ट, in the second part, the green goes with green. On the axis of figure 7.3, so 7.3 is this one, the green with the green. Draw a graph to show the variation with time of the voltage across diode B. So the other one. अब B वाले के लिए बनाना है. So green with green. ठीक है ना? So long as the mustard color graph and the green colored graph are anti-phase with each other, the job gets done. ठीक है guys? जरा 2-3 लोग मुझे ओके कर दो कि you've gotten the idea कि एग्जाम में वो आपको बेनिफिट किस तरह से दे रहे होते हैं. ठीक है, so I'll just go back to my working जहां पर मैंने स्टॉप किया था. सॉरी यार. नेक्स्ट पार्ट. A capacitor is now connected. ड्रॉ कर देता हूँ. Across the output. Sketch the graph for output voltage against time. So if you remember from the previous class, we discussed कि capacitor का क्या impact होता था. And this is how the shape of the graph would now look like. Okay, this is the working from the previous class. That the presence of the capacitor provides a smoothing effect, or it tries to stabilize the output voltage, or it tries to regulate the output voltage. सही है, so the steepness reduces kind of, or smoothing occurs. All right. Moving on. ये हमने last class में किया था. नेक्स्ट पार्ट के अंदर एज ए सेड मैंने सारे के सारे पार्ट्स को एक साथ ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है ना. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट देख लेना. तो अ ग्राफ इज गिवन टू यू वंस अगेन फॉर द आउटपुट वोल्टेज अगेंस्ट टाइम. सो ग्राफ इज प्रोवाइडेड. लिख देता हूँ. And the question is sequentially asking you to work out the following things. So in the first part, you are expected to find out the time during which the capacitor discharges itself. याद कीजिएगा, ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि चार्जिंग कब से कब तक होती है और डिस्चार्जिंग कब होती है. तो remember, let me repeat myself. When the supply used to rise, charging उस वक्त होती थी. So the capacitor used to charge itself during that course of time. And when the supply used to show a drop, that was the time during which the capacitor used to discharge itself. So if they're asking you the time frame during which the capacitor will discharge, the discharging occurs
when the supply begins to fall. Something along these lines. ठीक है, from T1 to T2. T2 minus T1 is the time duration. So T2 minus T1 is fine now. Likewise, the time during which the capacitor charges, the charging will be when the supply is showing a rising current. So either from T2 to T3 or T3 minus T2, जो भी आपको convenient लगे. अच्छा, 0 to T1 भी लिख सकते हैं, जो रोएल ने लिखा है ना यार, बट मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ T1, T2, T3, तो मुझे वो वाले टर्म्स चाहिए थे. 0 to T1 फिर इंक्लूड ना करना. वैसे वो भी करेक्ट तो है, वो भी करेक्ट है एज आई सेड. अच्छा, थर्ड पार्ट में ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था. Suggest what happens if multiple capacitors are connected in parallel across the output. So अगर आपको थ्योरी की टर्म्स में लिखना हो ना, तो आपकी वर्डिंग हो जाएगी the lines will get flatter, or alternately the steepness of the lines will decrease. और अगर आपको ग्राफ पे शो करना हो, I'm sure from the last class आपको याद होगा, this is how the shape of the graph would look like, something along these lines. ठीक है, तो मैंने ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है. पार्ट 3 का आंसर लेबल कर दूं और वर्डिंग्स नीचे लिख दी हैं. इसको भी शिफ्ट करता हूं. Sir, why? As in, okay. You are asking me the answer for part 3, na Reha? All right. So, Reha, if you have multiple capacitors in parallel, let me show that diagrammatically. So, having more capacitors kind of benefits us in the following manner. More capacitors would mean there is going to be a greater quantity of charge now stored by this combination of multiple capacitors. So, if they are able to store charge more effectively, Reha, then surely when the right time comes, they'll be able to discharge more efficiently as well. So multiple capacitors will be able to discharge more effectively as opposed to a single capacitor. And if they are able to discharge more efficiently or more effectively, then the end result would be that they'll be able to regulate the output graph in a better manner. So when I say they'll be able to provide a better regulation, that means they'll be able to provide a better stability. And a higher stability means that the line will appear to be more flatter than before, if that makes sense. Oh, okay, got it. सही है. इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज नहीं कर रहा, सॉरी, माय बैड. इसको वापस ले जाऊं. अभी भी कुछ थोड़े से पार्ट्स बाकी हैं. ठीक है. अब जो पार्ट्स बच गए हैं ना, इनको ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूँ. सो व्हेन आई अपलोड दिस लेक्चर ना यार, मैं ज़ाहिर है इसको इसी तरीके से अपलोड करूंगा. आई कांट डू एनीथिंग बेटर देन दिस. तो आप इंडिविजुअल पार्ट्स को फिर अलोंग साइड द डायग्राम खुद देख लेना. एनीवेज, ये एक्चुअली 7th पार्ट है. एंड देन देयर इज वन मोर. Multiple capacitors are now replaced. Where is part 5? Maybe I've made a mistake. Then this should be part 6. 1, 2, 3, 4,
ओके, मैंने 4 2 दफा लिख दिया था। This should be part 5, then 6, and this is 7. So far so good, सही है। All right. Multiple capacitors are now replaced. ये काम भी हमने लास्ट क्लास में किया था। Multiple capacitors are now replaced with a single capacitor, and the resistor is replaced with a variable resistor. So I'm making the change on the diagram. So multiple capacitor is replaced by a single capacitor, and the resistor replaced with a variable resistor. Suggest what happens to the shape of the graph if the resistance of the variable resistor is increased. अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो तो वी एक्चुअली डिस्कस्ड दिस। मैंने वर्डिंग्स वापस लिख दी हैं। रिहा, यू weren't देयर ना? आई थिंक शायद इस वर्डिंग से आपको आइडिया हो जाएगा, बट हम लोगों ने वैसे इस पार्ट को लास्ट क्लास में किया था। एज आर इंक्रीजेस, less current goes into the branch AB, and more, that is larger fraction of the current, goes through the branch CD. Okay, so if you increase the resistance, lesser current goes into the branch labeled as AB, and a larger fraction goes through the capacitor wali branch labeled as CD. This allows capacitor to accumulate more charge. Therefore, it can discharge more efficiently, causing the lines to once again become less steeper as shown. So बना के दिखा देता हूँ. So the original graph, black, was when the resistance is kept to be of a lower value, and the so-called red wala graph is when the value of the resistance is increased. ठीक है, तो मैंने रीजनिंग नीचे लिखी हुई है और साथ साथ में इसके ग्राफ की कंपाइलेशन कर ली है. What about the part where multiple capacitors are becoming single? Oh, that's the continuation of the question. So the statement just says that the multiple capacitors are now replaced with a single capacitor, and the question further continues along the same line. And this time the resistor is replaced with a variable resistor. Okay, so those are not two individual parts, rather the continuation. One final part. So ये 8 हो जाएगा. तो इसकी सिर्फ नंबर को चेंज कर दूं 8. ये थोड़ा सा मुश्किल है. So this might just take some time for me to explain as well. I'll just try to sort it out जितना हो सकता है. Let me just erase these graphs. Oof. They only asked this part once, and then they realized that our students can't develop this kind of a tertiary level thinking. So I guess फिर दोबारा CIs वालों ने पूछा ही नहीं ये part. खुद ही शर्मा गए. हालांकि simple था, but many students kind of they couldn't get the idea कि यार इसका result कैसे निकालना है. What the question was, they gave you the original graph which I'm constructing right now. So this is how the original graph was given to you. Um, something along these lines. The points were labeled. So there was one point marked as T1, the other one marked as T2, and the third one marked as T3.
So these were three reference points given to you. And the question was asking you, looking at this original graph, so this graph is given. You were asked to determine the time period of the original AC supply. So the shape of the AC supply was not provided to you. Rather, the final shape or the final outcome was given to you as shown over here. And the question was asking you to use this graph and try to extract all information from this graph with the intention of finding out how would the time period for an AC supply would look like. Now the students were, काफी सारे students that particular year just kind of got confused कि यार AC supply का ग्राफ ही नहीं है तो हम AC supply का टाइम पीरियड कैसे निकालें बिकॉज थॉट प्रोसेस हम सब लोगों का ऐसा ही चलता है कि अगर हमसे कोई पूछे ना कि AC supply का टाइम पीरियड निकालना है, if anyone gives us an AC supply, let's suppose if an AC supply is given to us kind of like this, almost 100% of the times students फौरन से बोलेंगे हाँ सर इसका टाइम पीरियड तो आ जाएगा. उनसे पूछे ना कैसे आएगा, राइटली सो they'll say कि सर एक पीक से लेके दूसरे पीक तक जाना है, टाइम पीरियड आ जाएगा. They'll literally highlight this for you and this is perfectly right कि वाकई टाइम पीरियड तो आ जाएगा. Unfortunately this graph is not given to us. Rather, this graph has actually been altered way many times until the graph has become somewhat like the one that was presented to you. So the graph has been changed and changed and changed. अच्छा अब क्या क्या changes हुए हैं? So firstly, diodes ने rectification कर ली. Consequently ये हुआ कि ग्राफ का शेप ही बदल गया. ऐसे हो गया. Because of the rectification, this is what happened. So if I ask you कि चलो rectification वाले में आप मुझे टाइम पीरियड मार्क करके दे दो, आई गेस आप फिर भी कर लोगे. आप बोलोगे सर स्टार्ट फ्रॉम वन पीक, ignore the next peak and stop at the very next one, and there you go, you'll get the time period. So so far so good. Start from one peak, ignore the next one and stop at the very next one and you'll get your time period. Perfect. But unfortunately ये भी given नहीं था. ये वाला ग्राफ भी स्मूदन हो चुका है because of the impact of the capacitor. So ये ग्राफ दिया हुआ था. I guess if you can show me the time period in graph labeled as 1 and if you can translate that to graph labeled as 2, then I'm pretty sure you should somehow be able to manage and translate that onto graph number 3 as well. और मेरा ख्याल है आप agree करेंगे on graph number 3 as long as you remember my statement just a while back. I said start from one peak, skip the next one and stop at the very next one, and that gives you the time period. So time period तो आ गया. आ तो गया. But they wanted the answer to be given in terms of T1 and T3. So मेरा ख्याल है अब आप थोड़ी सी अकल चलाएं. मैंने तो बहुत काम आपके लिए आसान कर दिया है. From T1 to T3, look carefully. From T1 to T3, let me use the same pink color. If they want the answer from T1 to T3, mind you, T1 to T3 is from one peak to the next one. T1 to T3 is from one peak to the next one. And the time period was start from one peak, skip the next one, stop at the very next one. So if you guys are understanding what I'm trying to communicate to you, then on the basis of that, my time period based on the original graph should be written as follows.
मैं लिखता हूँ आई एम होपिंग कि शायद मुझे दोबारा ना एक्सप्लेन करना पड़े. So long as you are listening to the statement which I am suggesting time and again, कि my time period should be starting from one peak, skipping the next one, and then stopping at the very next one. So on the basis of that, the time period should be हाँ जी, स्क्रीन पे सब लोगों ने सही लिखा है. रायन, तुमने पहले लिखा था T3 माइनस T1, है ना? बट आई गेस अगर तुम देखोगे तो जो बाकी लोगों ने आंसर्स दिए हैं ना, वो ज्यादा सही है. तो हुसैन का सही है, रिहा का सही है, हमजा का सही है. इट शुड रादर बी ट्वाइस ऑफ T3 माइनस T1. तो रायन तुम पहले ओके कर दो. रोहिल ने T5 बना दिया. T5 तो है ही नहीं डायग्राम में, लेकिन वैसे तुम्हारा शायद आगे जाकर आ जाएगा T5. अच्छा, टाइपो, ओके. हाउ सर, गौर से देखो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था. लुक एट द सेकंड डायग्राम. सेकंड डायग्राम को चेक करो. स्टार्टिंग फ्रॉम वन पीक, skipping the next one, and stopping at the very next one. Then apply my statement on the first diagram. Starting from one peak, skipping the next one, and stopping at the very next one. So then don't you think जो आंसर सब लोगों ने दिया हुआ था 2 times of T3 minus T1 sounds reasonable enough. ठीक है ना? And if the question was to find out frequency, तो I'm sure आप निकाल सकते हो. टेक्निकली देखें, आपने खुद ही आंसर दिया, बट द मोमेंट मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, यू आर एबल टू गेट द हैंग ऑफ इट. और होता यही है कि वो एग्जाम के अंदर जो है ना, वो स्टूडेंट्स आर काइंड ऑफ स्टक ऑन द आइडिया कि यार एसी सप्लाई होगी तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे. दे फेल टू रियलाइज कि अगर एसी सप्लाई नहीं है तो आप अज्यूम कर लें और बैक ट्रैक करना शुरू कर दें. मैंने बैक ट्रैक किया, मैंने पहले एसी बनाई, फिर उसको फुल वेव किया, फिर उसको स्मूदन किया, तो काइंड ऑफ एक एनालिसिस होना शुरू हो गया कि रिजल्ट क्या आएगा. सो एनीवेज, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए थी इफ नीडेड. तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है गाइस, यहाँ पर इसकी थ्योरी का काम तो मेरा कंक्लूड हो गया है. मैं सुलेमान, आई बैक? हाँ सुलेमान भाई, ऑल राइट. ठीक है, सो वर्किंग देख लो. मैं ये सॉल्व वाले क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा अब whenever I get some time, I think after 8:30 or something. तो फिर जरा इनको रिव्यू प्लीज कर लेना. So the question says, the rectified output of a sinusoidal signal generator is connected across a resistor R, whose value is 1.5 kilo ohms. I'll need this value, तो जरा याद रख लेना. As shown in figure 4.1. The variation with time of the voltage across R is given. So the graph is provided to you. State how this rectification can be achieved. ठीक है ना? So this is half wave. So half wave के लिए I don't need a combination of 4 diodes. Huh? So just the terminology by placing a single diode. So if they expect you to draw it ना, तो बस एक डायोड बनाना है ना. So it doesn't really matter कि आप कहाँ पर बनाते हो. तो in case if needed, just draw it anywhere in the circuit if required. So since this is half wave rectification, therefore we can achieve this kind of a shape by simply using the help of a single diode as shown in the diagram. अच्छा, पार्ट बी में
As you can see, now they have positioned the capacitor, and hence as a result, a smoothing effect is occurring. See, you can clearly see कि अब smoothing effect होना शुरू हो गया. So in the first part, they are asking us to calculate the mean voltage. आप numbers थोड़ा सा carefully graph पर से देख लो. I think the starting value is 6. Mean is average now. I think the lowest value is 4.8 if I'm not wrong. So average out करेंगे. So that turns out to be 5.6 volts. In numbers that are tally kar lena. I'm just highlighting the two numbers. It starts from 6, I believe, drops down to somewhere close to 4.8. See, so the two concerned values using which the mean can be worked out. Okay, so the value varies from 6 down to 4.8. So the mean value in this case is 5.6. Next part, calculate the mean current. So now I'll need to use that value of the resistor 1.5 kilo ohms that was given earlier on in the question. So resistance was 1.5 kilo ohms. हाँ यार, अली या रोहेल अगर है कैलकुलेटर बेटा तो फिगर आउट करके जरा करंट दे दो. तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट रीड कर रहा हूँ. करंट मिल जाए तो I'll probably need this. हाँ 3 point something. ओके यार शाकिब ने लिखा है it's 5.4. Shakib, what's point 5.4? Previous part, is it 5.4? Do I need to change it? Potential difference, or is it right? Guys, जरा average निकालो. 10.8 divided by 2, I believe 5.4 होगा. So yes, मैं change कर लूँ. यार I need to change that answer है जो साकिब suggest कर रहा था. मैंने 5.6 गलती से लिख दिया है. That should be 5.4. So hence the answer for the next part needs to be changed accordingly as well. Sorry यार. Okay, शोएब जरा दोबारा देखो. I think change करना पड़ेगा. 3.6 milliamperes. ठीक है. Alright, next part में देखो क्या लिखा है. The time in each cycle during which the capacitor discharges. Remember, capacitor begins to discharge when there is a drop in voltage. So let's go to the graph to see time frame क्या बनेगा. I'll mark that for you. मैं पिंक वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ. Look carefully यहाँ. So discharge का time मैंने मार्क कर दिया. जरा देख लो कितना आ रहा है. So capacitor discharges when the supply begins to drop. .027. Thank you. मैं डायग्राम पे भी मार्क कर देता हूँ just in case. Next part में calculate the charge passing through the resistor during one discharge. Um, I have all the numbers to work around with.
So I've taken the answer for the current जो आपने दिया था, and I've taken the value of the time जो आपने suggest करी थी. कितना लिखूं रोहिल? Haris, I've allowed you in this group. लेकिन हारिस आपकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है. So in case if you're there, so I'll just get over with this class. फिर मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है हारिस. ओके, सो चार्ज का रिजल्ट आ गया. एंड लास्ट पार्ट के अंदर how can we calculate the capacitance of the capacitor? So this is based on the previous topic. मैं लिख दूं इनकेस अगर आपको याद ना हो तो. Charge is directly proportional to potential difference. तो इसकी बेसिस पे हमारा फॉर्मूला बनता था, if you remember, Q is equal to CV. So I can use the formula to calculate the capacitance. The charge is already calculated in the previous part. Capacitance find करना है. Potential difference के लिए I need to go back to the graph. मैं ग्राफ पे ही लिख देता हूँ, तो आप जरा चेक कर लीजिएगा. If the voltage drops from 6 down to 4.8, so potential difference कितना बनेगा, यहीं पे लिख देता हूँ. फिर इसको लास्ट पार्ट पे कॉपी डाउन कर लूंगा. So if the voltage drops from 6 down to 4.8, potential difference will be, sorry for the mess, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है. I'll just make an asterisk and then I'll write down this value at the bottom. कैपेसिटेंस का आंसर अगर आ जाए ना, तो जरा सजेस्ट प्लीज कर देना रोहिल. सॉरी, रोहिल. नहीं यार, A2 बहुत लंबी कहानी है रे. हाँ, एएस में एज ए टीचर बोलना कम पड़ता था. A2s के अंदर इट्स जस्ट टीचर का ही बोलना बोलना होता है. सो मेरे एंगल से तो बहुत बोलना पड़ता है. So I don't particularly like the idea of teaching A2s as much as AS, simply because के AS में टीचर के बोलने का काम काफी कम होता है, because lesser theory to deal with ना. A2s में तो it just keeps going and going and going. 8 into 10 to the power of -5. अच्छा, ये वाली मैं एक पार्ट करा के फिर कंक्लूड करता हूँ. ये वाली आप मैं अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग एक नजर क्वेश्चंस को देख लेना. अ, ये गो थ्रू खुद कर लेना. मैं सॉल्व वाले आंसर्स की एक वर्कशीट पूरी रेक्टिफिकेशन की अभी अपलोड कर दूंगा. ओके, सी पार्ट के अंदर a second capacitor is now connected in parallel. So now we have multiple capacitors. The second one is connected in parallel. And they're asking you to draw a graph to show how would the new shape of the graph would look like. So since you have a second capacitor in a parallel combination, so that should provide a better smoothing. So diagrammatically speaking, this is how the new shape of the graph would look like. Mustard color से बना देता हूँ, थोड़ा सा obvious ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है यार, यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ.
अच्छा, तो मुझे आज है ना आई थिंक 3 या 4 वर्कशीट्स मतलब वो 3 आई थिंक थ्योरी के पेजेस हमने किए हैं, उसको अपलोड कर दूँगा और एक मैं सारे क्वेश्चंस रेक्टिफिकेशन के अपलोड कर दूँगा। दे विल बी काइंड ऑफ सॉल्व्ड लाइक द वे दे आर डन ओवर हियर। उनको प्लीज़ आप रिव्यू कर लेना। कोई क्वेश्चन उसमें से पूछना हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में याद करा देना, आई विल मेक यू डू देम। अदरवाइज़ सॉल्व्ड होंगे तो व्हेन यू विल गो थ्रू देम तो आई गेस यू विल अंडरस्टैंड। तो टाइम निकाल के ज़रा वो काम कर लेना। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ। आई विल अपलोड द लेक्चर रात को देर से हाँ थोड़ा। सो अराउंड 9 o'clock तक कर दूँगा। ऑलराइट गाइस, खुदा हाफ़िज़ हाँ।